सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो हमने दो डायग्राम भी बना रखे हैं, जैसे सिंपल मैनोमीटर, जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर। बेसिकली है क्या, ये आपका एक हेवियर लिक्विड है जो इसके अंदर भरा हुआ है, और ये आपका ये जो लाइटर लिक्विड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वन एंड है, तो सिंपल मैनोमीटर में लिख सकता हूँ वन, it consists of glass tube in which one end is open and one end is fixed with a point A, whose pressure has to be measured. ठीक है, so the pressure will be, so the gauge pressure will be find out from this simple manometer. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो आप गॉज प्रेशर निकालेंगे, क्योंकि हैवी लिक्विड आपका जो है ये H2 वाले एंड में है, इस वाले एंड में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ρ2G H2 minus ρ1G H1. This is the formula for simple manometer to find out the gauge pressure like this. ठीक है ना। अगर हम बात करें डिफरेंशियल मैनोमीटर की, तो इन डिफरेंशियल मैनोमीटर वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन डिफरेंशियल मैनोमीटर, in differential U-tube manometer, we will find the difference of pressure, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका हेवियर लिक्विड, ठीक है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, वो कैसे होती है, यहाँ से देखिए, प्रेशर दिया जाता है हमारा, दैट वाज रो ए माइनस रो बी एच जी प्लस ये जो हमारा y है, y इंटू रो बी, दिस इज रो बी H G, राइट, एंड माइनस का, इसको हम माइनस कर देंगे इस वाली साइड से, X रो A H G. So this is your final formula for finding the pressure in differential manometer. तो differential manometer में basically difference of pressures find out करते हैं, that was rho A and minus rho B. So it consists of glass tube, it consists of U-tube, glass tube, in which one end is point A and one point B, and one other end point B is closed, where pressure has to be measured, pressure has to be measured.
सो दिस इज योर डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसकी इक्वेशन भी मैंने लिख दी है यहाँ पे आपके सामने, और मैंने यहाँ पे सिंपल मैनोमीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये आज आपका लेक्चर खत्म होता है।